So, few months back, I received a sneaker mystery box from ShopeeOnline1.pk and I made a video about that. And I got amazing response from you guys. That video is the highest viewed video in my channel. And I received 3 sneakers in that box. One was Easy 700 Wave Runners, other was Travis Scott Air Force Ones, and the third sneaker was Sean Wotherspoon Nike MX 97/1. But you guys were spamming that video as well. You guys commented that this is a bad fake, this is a bad replica, and I know that. And this is the reason why I addressed the same thing on that video as well. और अब हम चलते हैं हमारे दूसरे बॉक्स की तरफ. आई हैव नो आइडिया विच इज़ द सेकेंड बॉक्स. ओके. There are 3 boxes. और तीसरा वाला, ओके, let's keep the third one, the best one, for the last, and let's see what this is. This is a typical Nike box. और इस पे जो है no नहीं यार, इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है that this is Sean Wotherspoon Air Max 97/1. Oh my god, but this is not the original Sean Wotherspoon box. I don't know that ये बॉक्स का क्या मसला हो गया. This is not the Sean Wotherspoon original box. And let's see what is. Oh boy, the same note is here. And here is the dust bag of Nike. बहुत ही ज़बरदस्त. And here is the payment slip and others. नहीं यार, नहीं. Oh my god. This is Sean Wotherspoon. I can't believe. इसके ऊपर नाइकी की ब्रांडिंग हुई है. And here is the other pair of Sean Wotherspoon. यार, can you see this shoe? Oh my god. I don't know why the box of this Sean Wotherspoon was changed. मुझे पता नहीं है ये ऐसा क्यों हुआ. But So after reading all of your comments, you guys were spamming me as well. तो मुझे ये चीज़ पता है. I am collecting sneakers for about 3 years now, and I know what is a good replica and what is a bad replica. I know that. And after reading those comments, my reaction was, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल. so after that video went up to the YouTube, I received a call from ShopeeOnline1.pk. Ho, what is up, beautiful people? Assalamu alaikum, and I hope you guys are doing well. Thank you for stopping by. And if you are here, then I'm assuming that you love sneakers. And if you love sneakers, then you are at the right place. This is your boy Zaneer Ali Sani from Sneakers and Zaneer with another video on this channel. If you're new here, then make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon to know the latest updates of my videos. You can find me on Instagram @ZaneerSani to know the latest updates of my giveaways and my recent videos. You can show some support on my Patreon. The Patreon link will be in the description. Make sure you click on that. And with that said, so I received a call from ShopeeOnline1.pk and they told me that they were very sorry that I received that bad replica pair. And they just told me that they are going to send me a gift. I had no idea what that gift was, but they just told me that you will receive something on your mail. And that's exactly what happened. I received a box on my mail, and when I opened up that box, I was very much happy because मेरी जो complaint last videos में थी, वो सारी complaint शायद compensate हो चुकी हैं. और वो box कोई दूसरा box नहीं. That box was bam! Yes! That is the original box of Nike Air Max 97 Sean Wotherspoon. और ये जो है, जब मैंने ये बॉक्स खोला तो मुझे बहुत प्यारा लगा. और मैंने जो चीज़ लास्ट वीडियो में एड्रेस की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों ने उस चीज़ों का बहुत ख्याल रखा.
और उन्होंने जो है मुझे ये बॉक्स भेजा है. सो लेट्स जस्ट चेक द बॉक्स आउट. तो आपके सामने जो है यहाँ पे देयर इज़ दिस नाइकी, और ये जो नाइकी है दिस इज़ इन डिफरेंट कलर्स, यू कैन सी दैट. और ये कलर्स जो हैं ये आपको जूतों में भी नज़र आएंगे जो हम बाद में देखेंगे. बट दिस प्रिंट इज़ इन कोडरॉय मटीरियल. सो द कोडरॉय मटीरियल आपने बहुत सारे 90s या 80s के जैकेट्स में ये मटीरियल देखा होगा. तो ये कोडरॉय एक मटीरियल होता है, एंड दैट मटीरियल इज़ प्रिंटेड ऑन द बॉक्स, एंड दैट मटीरियल इज़ ऑल्सो ऑन द स्नीकर एज वेल, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे. तो ये जो है दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द बॉक्स. अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ पर भी देयर इज़ दिस नाइकी, और उस पर भी जो है कोडरॉय प्रिंट है और सेम कलर्स यूज़ हुए हुए हैं. अगर हम बैक पे देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है देयर इज़ दिस नाइकी विद अ स्वूश इन द सेम कलर एंड प्रिंट. और यहाँ पर ऑन द साइजिंग चार्ट यू कैन सी दैट दिस स्नीकर इज़ इन साइज 10, और ये स्नीकर का जो नाम लिखा हुआ है दैट इज़ Nike Air Max 1/97 Sean Wotherspoon. SW stands for Sean Wotherspoon, we all know that. और इस स्नीकर की खास बात ये है कि ये स्नीकर शॉन वॉदरस्पून ने डिज़ाइन किया है. जिनको नहीं पता मैं बताते चलूँ, शॉन वॉदरस्पून इज़ अ स्टोर ओनर ऑफ राउंड 2. राउंड 2 एक स्टोर है अमेरिका में, और उसके जो हैं शॉन वॉदरस्पून ओनर हैं. एंड देन देयर वाज दिस 30th एनिवर्सरी ऑफ नाइकी एयर मैक्स. और हमेशा की तरह नाइकी जो है एक कंपटीशन करवाता है जिसमें 12 रेवोल्यूशनरीज़ को बुलाया गया था, और उनमें से एक शॉन वॉदरस्पून थे, और उनको कहा गया था कि आपको अपनी पसंद का कोई भी नाइकी एयर मैक्स डिज़ाइन करना है. सो शॉन वॉदरस्पून डिज़ाइन दिस पर्टिकुलर स्नीकर and he was the winner of that competition, and that's how Nike came to Sean Wotherspoon and they gave him the contract and they told him that this is your sneaker and you can design how many pairs you want. So which is very great. I love this story behind this sneaker was amazing. And also for your information, this sneaker was supposed to be sneaker of the year 2018. However, this sneaker was second in number. But for me, it's sneaker of the year 2018. No doubt. I love this sneaker. तो हम जब ये स्नीकर खोलेंगे तो यहाँ पर खोलने के साथ ही we will get this note. और ये जो नोट है ये more air तो लिखा हुआ है, बट इसके नीचे एक नोट भी लिखा हुआ है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ. For the 30th anniversary of the Nike Air Max 1, 12 revolutionaries were invited to design the future of air. The first ever Air Max designed by the community for the community. The winner was Sean Wotherspoon, vintage store owner and lifelong Air Max fan, who brought together an Air Max 97 upper and the iconic Air Max 1 midsole and outsole. Like the corduroy, Nike hats of the 80s that inspired them. They are made to wear and designed to fit. The more you wear them, the better they get. And it's true. I do agree with the last line which they have wrote, that this is Nike Air Max. The more you wear them, the more comfortable it gets. This is not easy boost. The moment you slip in your foot and bam, you get the comfort. No, this is Nike Air Max 1. You gotta wear it, and you gotta wear it multiple times. So I think that this story behind this sneaker is very amazing. और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है there is this paper, तो हम ये पेपर हटा देंगे, and then we receive डस्ट बैग. और ये जो डस्ट बैग है दिस इज़ इन येलो कलरवे और बेज कलरवे, आई डोंट नो. और ये जो है ये भी जो है कोडरॉय मटेरियल से बनाया गया है, और ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा डस्ट बैग है विच इज़ वेरी नाइस. इसको हम साइड पे रख देते हैं, एंड देन वी गेट दिस शॉपिंग बैग ऑफ नाइकी, और ये भी जो है बहुत ही अच्छा सा है, और हम जो है इसे भी साइड पे रख देंगे. एंड bam, here is this sneaker. And to be very honest, the quality of this sneaker is better than the previous one. और ये जो है बहुत ही amazing सा sneaker है. So let's just talk about the sneaker first. So this sneaker is known as hybrid sneaker. Hybrid sneaker होते ही क्या है? Hybrid sneakers are दो sneakers जो दो सिलेवेट्स को मिला के बनाए जाते हैं.
So this sneaker is the mixture of Nike MX 97. This sneaker has a upper of Nike MX 97, and this sneaker has a outsole and the midsole of Nike MX 1, which is very nice. So this sneaker is Nike MX 97/1 Sean Wotherspoon, और बहुत ही ज़बरदस्त कलर से जो है ये स्नीकर बनाया गया है. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ दिस स्नीकर फर्स्ट. सो द फर्स्ट लेयर विच यू गाइज कैन सी दैट इज़ इन ऑलिव कलर वे, और ये जो है बहुत ही प्यारा सा कलर वे है. एंड देन द सेकेंड लेयर जो है वो पर्पल है, और ये बहुत ही छोटी सी लेयर है. एंड द थर्ड लेयर इज़ द ब्लू लेयर, यहाँ पर जो है ये ब्लू लेयर है. एंड द फोर्थ लेयर इज़ द पिंक लेयर विच इज़ वेरी नाइस. The fifth layer is grey in color, which is again amazing, and the sixth layer is of beige colorway, जो कि beige colorway जो पूरा जो है यहाँ पर है. So that is very nice. And how can we forget the seventh layer? The seventh layer is here, and this layer is in brown colorway, having a Nike swoosh with beige color, which is amazing. And also there is a Nike swoosh over here. This is a small Nike swoosh is on the tip of the toe, which is again amazing. ये जो sneaker है ये बहुत ही amazing color से बनाया गया है, and this is one of those sneakers जो आपकी attention को grasp कर लेता है, and which is amazing. And also one of the main highlighted part of this sneaker is that the lace tips. The lace tips are in different colorway. So the first colorway, let me show it to you guys. So the first colorway is in the gold colorway. तो ये जो है ये gold color में है. And the second lace tip is in silver. तो ये भी जो है ना ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये सिल्वर कलर से there is this mismatch, and you know that I am a person who love these kind of mismatch, you know that. And also this sneaker gives me a beach vibe, and there is a reason why I am telling you this. If you're gonna look at the colors, तो ये जो कलर है ये आपको बीच की वाइब्स देगा, और इसके साथ साथ if you're gonna see this thing, so you can see that there is this waves sticker over here, और ये जो है ये वेलक्रो है, तो हम चाहें तो हम इसे हटा भी सकते हैं. एंड देन देयर इज़ दिस नाइकी swoosh over here which is very nice. तो ये जो है ये हमें जो है बीच की भी वाइब्स देता है, एंड इट्स ट्रू दैट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वेयर दिस स्नीकर इन एनी बीच पार्टी और समथिंग लाइक दैट. एंड ऑल्सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द सॉक लाइनिंग. द सॉक लाइनिंग इज़ वेरी मच कम्फर्टेबल. इफ़ यू गोना सी दैट, तो ये जो है इन्होंने जो सॉक लाइनिंग यहाँ पे यूज़ की हुई है, दैट सॉक लाइनिंग इज़ इन वेलवेट, और ये जो है ये बहुत ही प्यारा सा कंफर्टेबल जो है ये आपको लुक देता है. एंड यू कैन सी इन द इनर सोल दैट देयर इज दिस नाइकी swoosh ओवर हियर, और ये जो है नाइकी swoosh एक स्माइली के ऊपर है इन इमोजी, और ये जो है ये बहुत ही अच्छा सा है. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मिड सोल. द मिड सोल इज़ अ टिपिकल Nike MX1 मिड सोल which has Nike air bubble, and that bubble is in red colorway which is very nice. This makes this sneaker a very comfortable sneaker. And the main highlight of the sneaker is the outsole of the sneaker. So let's just see the outsole. Let's start from the bottom. Here you can see that there is this pink color over here, और यहाँ पर जो है there is this grey color, and then there is this blue color, and on the tip of the outsole you can see that there is this yellow color. I think कि जितने भी colors इसके upper पे हैं वही colors इनके आउटसोल्स पे भी हैं, एक्सेप्ट फॉर ब्राउन एंड पर्पल. या दैट्स ट्रू. तो ये जो है ये बहुत ही कलरफुल सा स्नीकर है, और ये बहुत ही अच्छा स्नीकर है. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दिस स्नीकर वॉज सपोज टू बी स्नीकर ऑफ द ईयर 2018, बिकॉज ऑफ द वाइब, बिकॉज ऑफ द अमेजिंग हाइप, and because of the amazing background story of this sneaker was amazing. I loved it. After this sneaker, I became fan of Sean Wotherspoon, and all those latest collaborations Sean Wotherspoon has done with Asics and Adidas. I love them, and I really consider Sean Wotherspoon as a greatest sneaker designer in the market right now. So I really love it. And here is the second pair, and second pair is no other different from the first one. However, there is 3 more laces. So the first lace is this blue colorway, and the second, which is my favorite, that is in purple colorway, or the third color
is white, and also there is this Nike swoosh velcro sticker as well with it. And I don't think so that I will change laces of this sneaker, because I think that the beige laces with beige upper is really standing out. So I really love the laces which are on this sneaker. तो मैं जो है इसे दूसरे किसी कलर के साथ लेस अप नहीं करूँगा, and I think that it's nice. I really love this sneaker. And here is the on-feet review of Nike Air Max 97/1 Sean Wotherspoon. I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That don't shake her. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it galore. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up. I stay up. Put your bitch on my Snapchat while I make her. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a but I never get feelings, cause shorty, I know what you after. Okay, they watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me. So that was my on-feet review of Nike Air Max Sean Wotherspoon 97/1. Thank you so much again, ShopeeOnline1.pk, for sending me this gift. I wasn't expecting this. Really, I wasn't expecting this. And thank you so much for that. And also, if you're new here, then make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon to know the latest updates of my videos. We are gonna touch 500 soon, so make sure you click that red button. And you can follow me on my Instagram @ZaneerIsani to know the latest updates of my videos. This is Zaneer Ali Sani from Sneakers and Zaneer, over and out. Allah Hafiz.